ગુડ મોર્નિંગ. ચલો દરેક વિદ્યાર્થી જુઓ, આપણે ધોરણ 8માં 6 સુધી કમ્પ્લીટ થઈ ગયું, સ્વાપોથી અને ચોપડી બંનેમાં, બરાબર. હવે 7મો છે હાર કી જીત, એના લેખક છે સુદર્શન, બરાબર. આપણે પાઠ સમજાવી દીધો છે. હવે સ્વાધ્યાય પોથીમાં તમારે લખવાનું છે. તો હાર કી જીત એમાં સ્વાપોથીમાં તમારે સારા અક્ષરે લખવાનું છે, બરાબર. એમાં તમારે પ્રશ્ન 1 છે. શું છે કે નિમ્નલિખિત વિકલ્પો में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. तो આપણે પ્રશ્ન 1 છે, એમાં વિકલ્પ જે છે એ જ હું લખું છું અહીંયા, બરાબર. તો પહેલું છે બાબા ભારતી को किसे देखकर आनंद आता था. બાબા ભારતી હતા, એ કોને જોવે તો એને ખૂબ જ આનંદ આવતો હતો. તો એની પાસે કોણ હતું? સુલતાન હતો, બરાબર ને. એનો ઘોડો, એને જોઈને એને આનંદ આવતો હતો. એટલે પહેલામાં આવશે ઘોડે કો, બરાબર. હવે બીજું છે બાબા ભારતી ઘોડે કો ક્યા કહકર પુકારતે થે, બરાબર. તો એમાં પહેલું છે સુલતાન, એનું નામ હતું સુલતાન, એટલે સુલતાન કહીને એ બોલાવતા હતા. એટલે બીજામાં આવશે સુલતાન. ત્રીજું છે કે इलाके के कुख्यात डाकू का नाम क्या था. જે વિસ્તાર હતો એનો એ ડાકુનું નામ શું હતું? તો શું હતું? ખડકસિંહ. હવે ચોથું છે કે બાબા ભારતી ઓર ખડકસિંહ કહા પહોંચે. બંને જણા અસ્તબલમાં ઘોડો જોવા માટે ગયા હતા ને, એટલે અસ્તબલ. પાંચમું છે કે खड़कसिंह किस समय मंदिर में पहुंचा. तो रात्रि के अंधकार में, रात्रि के अंधकार में. હવે છઠ્ઠું છે कि खड़कसिंह ने किसे उसके स्थल पर बांध दिया. એની જગ્યા ઉપર કોને બાંધી દીધો? તો સુલતાન કો. સુલતાન કો, બરાબર. હવે પ્રશ્ન 2 છે તમારે, ખાલી જગ્યા છે. એમાં પહેલી ખાલી જગ્યા છે કે બાબા ભારતી કો ખાલી જગह जीवन से घृणा थी. બાબા ભારતીને શાના પ્રત્યે એને નફરત હતી? તો નગર આવશે. એમાં પહેલી ખાલી જગ્યા છે, એમાં આવશે નગર. હવે બીજું છે કે ઉસી ખાલી જગ્યા તુમારા મન મોહ લેગી. સુલતાન છે એની ચાલ મન મોહી લે, એટલે એની ચાલે એટલે એનું મન જે જોવે એનું મન મોહી જતું હતું. હવે ત્રીજી છે कि बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से. घमंड. रामावाला यहां से 3. पांचवी છે કે खड़कसिंह खाली जगह समय मंदिर में पहुंचा रात्रि के अंधकार में, बराबर ने. रात्रि के अंधकार के समय, बराबर. એટલે અંધકાર કે આવશે. હવે 5 પછી છઠ્ઠી અહીંયા લખી દઉં છું. છઠ્ઠી ખાલી જગ્યા છે, સોરી, 5મામાં આવશે અપાહિજ ખાલી જગહ થા, તો એમાં આવશે ખડકસિંહ આવશે, બરાબર.
ખડગ સિંહ. હવે છઠ્ઠામાં આવશે રાત્રિ કે સમય. બરાબર ને? रात्रि के अंधकार में, रात्रि के अंधकार के. હવે સાતમું આવશે कि बाबा भारती के पांव खाली जगह की ओर बढ़े. अस्तबल, अस्तबल. आठवुं छे तमारे के साथ ही घोर खाली जगह ने पाओं को मन मन भर का बना दिया. तो एमा आवशे निराशा. निराशा. बराबर. हवे प्रश्न 3 एमा शुं छे कि सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखो. तमारे वाक्य आपेलू छे अने ए बी सी में तमारे जवाब छे. तो तमारे जे खाली जग्या आपेली छे बाजुमां त्यां तमारे एमांथी जे बी आवतो होय सी आवतो होय तो आखुं वाक्य तमारे सामे लखवानुं छे. बराबर. तो पेलू छे कि घोड़े की चाल देखकर खड़क सी के. तो प्रश्न 3 छे एमां आवशे बी आवशे. बराबर. पहेलामां बीमा छे के हृदय पर सांप लोट गया. हृदय पर सांप लोट गया. હવે એના પછી તમારે બીજું છે શું છે કે बाबा ने घोड़ा रोक दिया क्योंकि कंगले की आवाज में करुणा थी. पहलू आवशे एमां कंगले की आवाज में करुणा थी. હવે ત્રીજું છે તમારે कि बाबा भारती ने खड़क सिंह को इस तरह देखा जैसे पेलू आवशे एमां जैसे बकरा कसाई की ओर देखता हो. त्रीजामां आवशे जवाब ज छे आ जैसे बकरा कसाई की और देखता हो. बराबर. हवे चौथुं छे तमारे कि बाबा भारती ने सुल्तान की ओर से एमाय पहेलू आवशे मुंह मोड़ लिया. मुंह मोड़ लिया. હવે પાંચમું છે તમારે कि सुल्तान जोर से हिनहिनाया क्योंकि एमां आवशे तमारे त्रीजું आवशे स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया था. बराबर. बाबा भारती आवता था एना पगनो अवाज थयो एटले ए ओळखी गयो. एटले आवशे स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया. पहचान लिया था छे. बराबर. हवे एना पछी तमारे प्रश्न 4 प्रश्न 4 एमां आपणे पेलू एक एक वाक्य में छे तमारे लखवाना जवाब. एमां पेलू छे तमारे कि माँ और किसान को क्या देखकर आनंद आता है. बराबर. तो एमां आवशे जवाब में माँ को अपना बेटा देखकर माँ को अपना बेटा देखकर
और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर आनंद आता है। बराबर। હવે બીજો છે કે બાબા ભારતી ने क्या छोड़ दिया था। बाबा भारती શું છોડી દીધું હતું એમણે? तो बाबा भारती ने रुपया डैश माल असबल माल असबाल जमीन आदि छोड़ दिया था। बराबर। હવે એના પછી ત્રીજો આવે છે કે બાબા ભારતી को क्या लगने लगा था। बराबर। तो એને શું થતું હતું કે હું સુલતાન વગર રહી શકીશ એવા એને વિચાર આવતા હતા। તો શું આવશે? બાબા ભારતી को लगने लगा था कि मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। बराबर। चौथो छे कि बाबा भारती सुल्तान की चाल के बारे में क्या कहते हैं। तो बाबा भारती सुल्तान के चाल के बारे में सुल्तान के चाल के बारे में कहते हैं कि जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा है। नाच रहा है। पांचमो छे नाच रहा हो। હવે ખડકસિંહ બાબા ભારતી કે પાસ ક્यों આયા? એની પાસે શું કામ આવ્યો હતો? ઘોડાને જોવા માટે। એટલે શું આવશે? ખડકસિંહ बाबा भारती के पास घोड़े को
देखने की इच्छा से उनके पास आया। बराबर। आटलानो तमे स्क्रीनशॉट पाड़ी लो। बराबर। एटले पछी हूँ आगळ लखावुं। हवे पछी छठ्ठो आवे छे तमारे बे मिनिट ऊभी रहूं छुं त्यां सुधीमां तमे स्क्रीनशॉट पाड़ी लो। बराबर। चलो हवे बधाए स्क्रीनशॉट पाड़ी लीधी हशे। बराबर। एटले हवे हूँ आटलो भूसी काढुं छुं। फरीथी बीजुं लखावानुं छे आगळनो प्रश्न। चलो आटलामां ज करावी दઈએ। એટલે હવે છઠ્ઠો છે શું છે? છઠ્ઠો કે બાળકો जैसी अधीरता से खड़कसी क्या बोला? तो खड़कसी बालको जैसी अधीरता से बोला। परंतु बाबाजी इसकी चाल न देखी तो क्या? सातमो छे कि खड़क सिंह ने बाबा भारती से जाते जाते क्या कहा? बराबर। तो खड़क सिंह ने बाबा भारती को जाते जाते कहा, बाबाजी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा, न रहने दूंगा। एना पछी आठमो छे कि बाबा भारती किस बात से डर गए थे? बराबर। तो खड़क सिंह ने कहा था कि यह घोड़ा
उनके पास न रहने दूंगा। इस बात से बाबा भारती डर गए थे। बराबर, गए थे। नवमું છે કે कांगले के अपने आप को किसका सौतेला भाई कहा। बराबर, तो कंगले ने अपने आप को दुर्गा दत्त वैद्य का सौतेला भाई कहा। सारा अक्षरे लखजो बधा। हवे आगळनो आपणे बीजा लेक्चरमां लखावशुं। बराबर, एटले आटलुं तमे स्वापोथीमां सरस अक्षरे लखी काढजो बधा।